चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25
वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude stage is low. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा।
इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision-making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का
चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोचन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission control, mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards
enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human-rated engine with indigenously developed LET throats, and the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes. And the CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the Isro centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISTRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud.
And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire Isro community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again,
all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated. The system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart, and hard work of all the Isro team members and the work culture of Isro and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of Isro team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I'm sure will continue in future also. Thank you very much. Space Applications Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team Isro for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system, which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire Isro family.
a very successful launch, and hearty congratulations to all the LUM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So once again, the Fat Boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LUM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing, as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. आज भारत पाई गर्व एवं गौरवर दिनटीए कहीं आज चंद्र अभिमुखे यात्रा कर सारी चंद्रायन-3 लक्ष्य रही किभली सॉफ्ट लैंडिंग करा जिवो। पूर्वर मध्य दुई थर प्रयास करा जायतिला एवं द्वितीय प्रयास विफल होगा सत्वे मध्य तृतीय प्रयास रे अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण दिग उपरे ध्यान दिया जायछि। सीधासळख भाव में आपण माने ये दृश्य देखुथिले श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर रु जो दृश्य ठीक 2:35 समय धार्य करा जायतिला आ प्रोसेस आरंभ हो जायतिला। प्रोसेस अनुसार एबे चंद्रायन-3 उत्क्षेपण करा जायछि। एबे चंद्र पर्यंत यात्रा करुछि, किंतु अपेक्षा रही अगस्ट 23 तारीख को। अगस्ट 23 रे जेतेबेले चंद्रर दक्षिण मेरु रे अवतरण करिबो से दिन मध्य अनेक गुरुत्व बहन करुछि एवं अनेक ज्ञान कौशल रे निर्मित होइतिबा ये चंद्रायन-3 एथिपाई गुरुत्वपूर्ण समस्तଙ୍କ उपरे नजर रखिछि। काहेकना पूर्वरु लक्ष्य थिला कि चंद्र रे पानी अच्छी कि नहीं ता से विषय अनुसंधान करबा। ता छड़ा ये जेभली भाव रे वर्तमान समय नुआ नुआ टेक्निक यूज करा जाइछि एवं अनेक गुड़िए क्षेत्र में केभली भाव में सहायता मिल पारिबो सेथिपाई सब प्रकार प्रयास करा जाइछि। तेणु भारतर एही मून मिशन रे ओडिशार भी बड़ योगदान रही, जहाँफल कि पूरा देशवासी तो नजर रही आजिर चंद्रायन-3 उपरे। किंतु चंद्रायन-3 रो बहु गुरुत्वपूर्ण तथा जटिल यंत्रांश जेहेतु तैयारी होइछि भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर बा सीटीटीसी रे। तेणु लॉन्च व्हीकल एवं स्पेस क्राफ्ट पई एहा वेल्व इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, जाइरोस्कोप, लेजर जाइरो, टेम्परेचर सेंसर आदि 12 कोटी टंकार यंत्रांश सीटीटीसी रे निर्माण होइछि। तेणु सारा ओडिशावासी नजर रही। तेणु जो रोभर रही रोभर रो जहाँ ओजन रही से ओजन ता सहित समस्त गोटे थाए जानिबाकू कि चंद्रायन आयुष केते। आयुष हेउछि 14 दिन। आपण मानकू आमे किछि गुरुत्वपूर्ण तथ्य देउछु। एथर लैंडर आउ रोभर प्रपल्शन मॉड्यूल ये 3टी गुरुत्व बहन करुछि। तेणु लैंडर ओजन रही 1726 किलोग्राम, रोभर ओजन रही 26 किलोग्राम, प्रपल्शन मॉड्यूल जहाँ ओजन रही 2148 किलोग्राम। किंतु एथर ऑर्बिटर को एथिरे संयोग करा जाय नाही। कहीं चंद्रायन-2 रे जेतेबेला ऑर्बिटर जाई लैंड करिथिला सेतेबेले टिके विफल होइतिला सत, किंतु ताकू माध्यम करा जायछि जहाँ फल कि
एथर लैंडर एवं रोभर मुख्य भूमिका निभाउछंती। अधिक सूचना आलोचना पाई सीधा सड़क जीवा रविशंकर अच्छी आलोचना करबा। रवि, भारत पाई आज गर्व और गौरवर दिनटीए, तृतीय थर पाई भारतर ये महा अभियान, ए प्रयास कौन पाई? जो सॉफ्ट लैंडिंग लक्ष्य रखा से नहीं अनेक प्रस्तुति किंतु सबुठ बड़ प्रश्न होउची भारत कौन पाई चंद्र मिशन पछरे लगी। जदि आप देखिए चंद्र रे सॉफ्ट लैंडिंग करिबारे तीनोटी देश सफल होइची, अमेरिका, रूसिया एवं चाइना। यही तीनोटी देश जितेबाला चंद्र रे सॉफ्ट लैंडिंग करिसेंती पूर्व एवं सफलतार सह सॉफ्ट लैंडिंग करने सह निजर जंत्रांश गुड़ी को रखी पारिछंती। सेतिपाई से माने जो विश्वर स्पेस मार्केट रही ताऊपर से मोनोपोली रही एवं से माने जेमिति चाहूँगी ताकू नियंत्रण करुँच जहाँफल कि भारत जितेबाला कौन गोटे स्पेस उपरे स्पेस रे कौन एक ग्रह हो कि नक्षत्र हो ताऊपर रिसर्च करने को चाहे कि कौन प्रकार पाणीपाग को नहीं कौन प्रकार रिसर्च करने कथा हो कि स्पेस क्षेत्र में जो महाकाश रे विभिन्न जो रोचे अनेक दिग को नहीं जो रिसर्च करने को हेले भारत को अनेकांश से ही देश मान निर्भरशील हो चलने पड़ूला। किंतु जितेबाला ये चंद्रयान मिशन लॉन्च कर लक्ष्य रखा कि चंद्रयान मिशन को भारत पाखरे एक बड़ टेक्निकल दिग रही जहाँफल कि एबे तो उत्क्षेपण हो सारी चंद्रयान 3 किंतु कक्ष स्थल रे जाई सॉफ्ट लैंडिंग करिवो। निहाती भाव तपस्विनी देखो जो चंद्रयान 2 मिशन टी होता ये 2 मिशन शेष मुहूर्त ही विफल होता कहीं यार लॉन्च ठीक थिला, ऑर्बिट रे जो स्पिन करिवार जो मोमेंटम थिला सेटा ठीक थिला। चंद्रर पृष्ठ रे जितेबाला अवतरण कला आम लैंडर सह पाखापाखि 2.5 किलोमीटर दूरतार ही कनेक्शन बा जोगाजोग विच्छिन्न होता इसरोर आम लैंडर सहित एवं जहाँफल कि से जो सॉफ्ट लैंडिंग करने कथा से क्रैश लैंडिंग होगला एवं से चंद्रयान 2 मिशन टी विफल होता। किंतु एथर कौन कर एथर अधिक पावरफुल मेसीन को व्यवहार कर जो आमर लॉन्चिंग व्हीकल रही LVM-3 जहाँ को कहुँ LVM-3 रे जो मेसीन रही से आहरी अधिक क्षमताशाली अन्य दिगटी को देखा जो लैंडर और रोभर जो क्यारी कर रोभर जो गोड़ गुड़िक रही से गोड़ गुड़िक 6टी चक विशिष्ट कर लैंडर गोड़ को आहरी मजबूत कर आउ गोटे कथा जब देखा चंद्रयान 3 जो मिशन रही बेले चंद्रयान 3 मिशन रे चंद्रर कक्ष स्थल रे पहुंची ऑर्बिटर केमिति कोन संजोग सब हेबो? देखो ये जो लैंडर आउ रोभर जो कथा कहुच्छी आउ गोटे दिग रोचे ऑर्बिटर कथा। ऑर्बिटर टी 2019 आमर चंद्रयान 2 लॉन्च करा से एक ऑर्बिटर रही है किंतु जेहेतु चंद्रयान 2 मिशन विफल है किंतु से मिशन रे जो ऑर्बिटर जो काम थिला से ऑर्बिटर ता मिशन को सफलतार सह पूर्ण करथिला। सेति लगी चंद्रयान 3 मिशन रे ऑर्बिटर को बाद दिया जायछि जहाँ फल कि जो एक्स्ट्रा लोड पड़िबा कथा स्पेस रे यही जो आमर मेसीन उपरे से लोड टी अनेकांश कमी जहाँ फल कि जो लक्ष्य रखा जाउछि कि सहजरे एवं अति सरल भाव में सॉफ्ट लैंडिंग करि परिबो आम लैंडर एवं रोभर को मध्य सेटारे अवतरण करा जाई किभली चंद्रर भूपृष्ठ को माप करा जिवो एवं चंद्र किभली रही वातावरण तार सेठारे पानीय जल बा जो जल कथा कहुच्छी जल रही ना नहीं एवं स्पेस क्षेत्र में अन्य जो ग्रह रही से ग्रह गुड़िक अनेक रिसर्च करा जाई परिबो। भारतर पाणीपाग कथा जदि कहबा भारतर पाणीपाग को चंद्रु थाई मपा जाई परिबो सेतिलागि सेप नामक एक सिस्टम से लगा जाइछि एवं सबुठ बड़ कथा होछि एथर जो लैंडर टी जाइछि से लैंडर रे हाजार्ड डिटेक्शन सेंटर हाजार्ड डिटेक्शन सिस्टम से लगा जाइछि जहाँ फल कि जो समय से जो चंद्रर आबड़ा खाबड़ा भूपृष्ठ उपरे से लैंडिंग करिवो से समय जदि किसी बाधा विघ्न आगे आसे आगे किसी सेमिति उपजे से बाधा विघ्न को तत्क्षणात डिटेक्ट करी किभली भाव में से रिएक्ट करिवो एवं कौन भी परिस्थिति रे लैंडर को क्रैश हेबाकू देबो नाही से नहीं मध्य समस्त प्रस्तुति करिछि इसरो एवं लक्ष्य रखा जाउछि कि आसंता जो अगस्त रही अगस्त मास सुधा अगस्त 23 तारिख सुधा संभवतः लैंडर चंद्रर पृष्ठ रे सॉफ्ट लैंडिंग करिजिवो। निश्चित भाव रवि 2008 मसीह जो प्रथम प्रयास कराइला सेतबेले केवल चंद्र रे पानी अच्छी कि नहीं अनुसंधान पाई आ 2019 रे जेतबेले द्वितीय प्रयास करागला अनेक आशा करा जाउथिला पुणी जो तृतीय बा मून मिशन 3 जहाँ को कह जाउछि एथिरे लोकन को कौन कौन उपकार मिलिबो बा केउ उद्देश्य रखी ए मिशन आरंभ होछि?
निहाती भाव तपस्विनी यहाँ सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण प्रश्न कहीं चंद्रयान मिशन भारत पाखे कौन रही मतलब भारतर कौन एमती आवश्यकता पड़ा जहाँफल कि चंद्र को जावाक चाहूँगी आपको से कथा प्रथम कहते कि आप देखिए जो विश्वर स्पेस मार्केट बा टेक्नोलोजी क्षेत्र में विश्व जी आगौची से भारत बाहर जीवन संधान अनेक देश से प्रयास अलरेडी आरंभ कर सारे कहीं भारत में पृथ्वी कथा जब देखा पृथ्वी में कोटना कोटी धीरे धीरे जो आम जीवन बचाई एठारे जीवन निर्धारण करने जो संपद मान रही जो संबल मान रही से धीरे धीरे कमी कमी आसबार लगे जहाँफल कि वर्तमान पृथ्वीर जो टेक्नोलोजी को व्यवहार कर साइंटिस्ट माने पृथ्वी बाहर अन्य क्यों ग्रह रे जीवन रही क्योंठी जीवन संभव हो पार से नहीं जो रिसर्च कथा कहुच्छी से नहीं रिसर्च आरंभ हो सारी भारत पछरे पड़ो कौन से लगी भारत चंद्र को पठाई चंद्रयान 3 जदि सफलतार सह चंद्र लैंड कर जाए तेज भारत को बहुत मात्रा यह हेल्पफुल हम स्पेस रिसर्च क्षेत्र में जदि कहवा दूर थी महाकाश थी भारत पृथ्वीर पाणीपाग को अनुधान करवा जमीक आप जानते ओडिशार अनेक समय बात्या आसे समुद्र अनेक प्रकार जो पदार्थ मिले खोज करी ए सब गुड़िक जिओ पॉलिटिकल सर्वे बहुत सहायक हे ये मिशन रे लगी यंत्रांश गुड़िक जो टेक्नोलोजी व्यवहार कर आगामी दिन में भारतर साइंस को भारतर टेक्नोलोजी को बहुत आगू को नेबारे बहुत सहायक हे। ओके बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आलोचना ये आम सहयोगी रविशंकर अधिक आलोचना करते तेणु भारत आज गर्व और गौरवर दिन आज चंद्र अभिमुखे यात्रा आरंभ कर सारी चंद्रायन 3 महाकाश विज्ञान क्षेत्र में जोड़ी हुई नुआ अध्याय एवं गुरुत्वपूर्ण कथा अगस्ट 23 को अपेक्षा देखु जो पर्याय क्रमे जाई चंद्रर कक्षपथरे सफल लैंडिंग करिबो तार एक ग्राफिक्स आम आपको देखाऊ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम पर्याय क्रमे ही एबेठू यात्रा आरंभ हो सारी ये यात्रा जारी रहिबो अगस्ट 23 तारीख पर्यंत जितेबले यह चंद्रर दक्षिण मेरु रे अवतरण करिबो सफल अवतरण करुछि कि नहीं से दिन को मध्य अपेक्षा रही तेणु महाकाश विज्ञान क्षेत्र में जोड़ी हेबो को नुआ अध्याय जोड़ी हो सारी अपेक्षा अगस्ट 23 को संग्राम दास महापात्र अच्छा ओडिशा रिपोर्टर प्रतिनिधि आलोचना करबा संग्राम सफल होइछि मिशन सफल उत्क्षेपण होइछि किंतु अपेक्षा अगस्ट 23 को किभଳି भाबरे सफल अवतरण करिबो ये पूरा प्रोसेस केमति रहितला निश्चित रूपे तपस्विनी देखंतु आज जो उत्सुकता थिला आज जो प्रथम पर्याय थिला चंद्रयान 3 रो कहबा को बोले ता संपूर्ण रूपे सफल होइछि निर्धारित कक्षपथ रे अवस्थापित हो जाइछि चंद्रयान 3 ता पृथ्वी पृष्ठरू प्राय 170 किलोमीटर उच्चतार अवस्थापित होइछि एवं आमर परवर्ती अपेक्षा रहिबो अगस्ट 23 को आपन जो कहले अगस्ट 23 रे ता चंद्रपृष्ठ रे अवतरण करिवो किंतु ता पूर्व मु जणाइबा चाहे अगस्ट 5 रे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण दिन रही कारण अगस्ट 5 रे चंद्रर कक्षपथ रे प्रवेश करिवो चंद्रयान 3 तापरे ता धीरे धीरे चंद्रपृष्ठर निकटतर हेबो एवं फाइनली चंद्र अगस्ट 23 रे चंद्रपृष्ठ रे अवतरण करिवो तो ये जो पूरा प्रोसेस को सारा देश एपरिक सारा विश्व मध्य अनै रहिथिला जे चंद्रयान 3 रो जो प्रथम पाहाच ता सफल होछि कि नै एवं इसरो पुणी थे प्रमाणित करिछि जे तार जो सबुठु बड़ रॉकेट एलवीएमसी आम जहाँ कहूँ ता पुणी थे प्रतिपादित करिछि जे ता महाकाश यान को निर्दिष्ट कक्षपथ रे पहुंचाइबा संपूर्ण रूपे सफल एवं भरोसा जोग्य निश्चित भाव संग्राम केवल सॉफ्ट लैंडिंग करिवो सेथि पई एथर ऑर्बिटर को केवल माध्यम करा जाइछि निश्चित रूपे चंद्रयान 2 रे आम जानिछु चंद्रयान 2 रे ऑर्बिटर सफल रूपे रही चंद्रपृष्ठ प्राय 100 किलोमीटर उच्चतार एवं प्रदक्षिण करुच्ची चंद्र को एवं चंद्रयान 3 रे चंद्रयान 2 रे जो विफल होता आपंकर लैंडर और रोभर केवल चंद्रयान 3 रे से दुईटी अंश को ही पठा जाइए एवं चंद्रयान 2 रे थिबा ऑर्बिटर सहित संजोग रक्षा करिवो एवं पृथ्वी सह वैज्ञानिक मान सहित जोगाजोग रे रहिवो सेठारु जहाँ फोटो किंबा अन्य कोनोसी तथ्य ताहा से ऑर्बिटर माध्यम रे ही इसरो पाई परिवो ओके बहुत बहुत धन्यवाद समस्त आलोचना पई दिले संग्राम महापात्र ओडिशा रिपोर्टर प्रतिनिधि अधिक आलोचना करुथिले समय स्टोरी के रखिबा नमस्कार।